Hi, I'm Rahul, and today I'm going to discuss the summary of chapter is poem for N.A. Gregory, First Flight, Class 10th. Guys, this chapter it is written by William Butler Yeats. William Butler Yeats, who is a very we can say great poet of the English literature, and his works are really very remarkable. Here, through this poem, he has conveyed one message there that in your life only no person or a very few persons are there who loves you very truly. जो आपको एकदम जो ट्रूली लव करते हैं वो बहुत कम या इक्का दुक्का लोग ही मिलते हैं. यहाँ पे हम जा रहे हैं स्टेंजा वाइज डिस्कशन करने. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पोएम स्टेंजा वाइज. सो फर्स्ट स्टेंजा हियर it is there. So never shall a young man, I am reading the stanza, never shall a young man thrown into despair by those great honey colored ramparts at your ear. Ramparts means जो लटें होती हैं कान के ऊपर जो होते हैं, that is called as ramparts at your ear. The poet indicates that love you for yourself alone and not for your yellow hair. Yeah, despair means sadness here. Despair means sadness. Ramparts means really में तो the castle is there, but the castle here means here the poet indicates that the hair that which comes on your ear. Yeah. So this poem, I have already told you that is एक संवाद है, कन्वर्सेशन है जो कि बिटवीन द पोएट एंड अ गर्ल हुज नेम इज N.A. ग्रेगरी के बीच में है. एंड द पोएट सेज हियर टू द गर्ल दैट अ यंग मैन कैन बिकम होपलेस इफ यू रिजेक्ट हिम. या एंड ही फर्दर टेल्स दैट इट इज ओनली this doesn't mean that he had true love for you in his heart, and it is because you have the honey colored beautiful hair. Honey colored, this is the color of the hair, honey colored hair. Yeah, and he had fallen in love with that honey colored hair by watching your honey colored hair. And the girl has very beautiful hair, and which fall on the ears, and all this beauty, all these things, all these lookups of that girl attract the person to love her. The poem says this. In that stanza, another stanza I am moving. लिटरेरी डिवाइस में मेटाफोर का यूज किया गया है स्टेंजा में, जो कि हनी कलर रैम्पार्ट्स यहां पे यूज हुआ है एट योर ईयर. दिस इज मेटाफर. सेकेंड स्टेंजा में वी आर बीइंग बैक. सो बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन, ब्लैक और कैरट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. एने का रिप्लाई है यहां पे फर्स्ट स्टेंजा विच वाज द क्वेश्चन ऑफ द पोएट W.B. Yeats. Here the N.A. replies, and she replies that she has a nice solution of that situation, that she can make her hair of any color. She can dye it brown, black or carrot of any color. Yeah, and she further tells that she will find the young man who will love her inner beauty, not by watching the hair or by outer beauty. जो आउटलुक है उसको देख करके उनसे लव ना किया जाए, उनके इनर ब्यूटी को, जो इनर क्वालिटीज हैं उन चीजों को देख करके उनसे लव किया जाए. या एनीबडी लव्स हर बाय वाचिंग द इनर क्वालिटीज विच आर इनसाइड हर, नॉट द आउटलुक, नॉट बाय वाचिंग द मेकअप, नॉट बाय वाचिंग द कलर ऑफ द हेयर. एने यहां पे बताती है W.B. Yeats को, एंड इट इज द रिप्लाई ऑफ द एने इन द सेकेंड स्टेंजा. We are moving to the another stanza, which is the last stanza of this poem. I heard an old religious man but yester night declare
that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. Esther night means previous night. Esther means yesterday. तो सेकेंड स्टेंजा में एने ग्रेगरी को सुनने के बाद में अगेन इन द थर्ड स्टेंजा पोएट सेज दैट ही हैड हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन मीन्स सैडू, एक सैडू था हु वाज टॉकिंग दैट ही कुड प्रूव अ फैक्ट दैट कि इट इज फाउंड दैट इन सम रिलीजियस बुक्स द फैक्ट वाज दैट इट इज ओनली गॉड या हु लव्स अस फॉर आवर what you call that inner qualities, not for our look. Either you are black, you are white, or of any color your hair, anything, your outlook is not good, you are not looking good, but the God is there only who loves you. He doesn't watch the outlook, he doesn't watch the quality of your hair, he doesn't watch the anything. He loves us for our inner qualities, जो कि हम काइंड हैं, ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं, वी आर हेल्पफुल और नॉट, ये सारी चीजें गॉड देखते हैं, ना कि इंसान देखता है. एंड ओनली गॉड कैन डू दिस. सो गाइज, आई एम डिस्कसिंग द समरी ऑफ फॉर रेने ग्रेगरी विच इज रिटन बाय विलियम बटलर. इज आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड आई ऑल्सो होप दैट you have subscribed my channel. If you have not subscribed, subscribe it to get the latest update of the videos. And if you have any comment regarding the chapter, you can put that in the comment box. Yeah. So here, यहाँ पे one thing is there I want to discuss in the last. Great honey colored ramparts at your ear means what? So this means the yellow colored hair of the girl the poet is indicating. And they are very beautiful and cover her ears like a protective around a fort. I have already told you, जो बाल आते हैं कान के ऊपर से गुजरते हैं, that is called. So thank you. I will be back with my another chapter.